हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर लास्ट आईपीएल ऑक्शन स्ट्रेटजी सेगमेंट एंड इसमें हम जो कि डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में। आपने प्रीव्यू जरूर देखा होगा, हमने प्रीव्यू भी डाला था कि जिसमें मैंने सारे स्लॉट्स पे एनालिसिस किया था। नाउ हम अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें आईपीएल के जिस ऑक्शन में जो होने वाला है 12 और 13 फेब को, उसमें आरसीबी किसको टारगेट कर सकता है। आरसीबी लास्ट टीम, बाकी 7 टीमों को ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप प्लीज जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी यार, कल हमने मॉक ऑक्शन प्लान किया है, कल और परसों। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, प्लीज उसको देखने हैं, जिसमें हम बिल्कुल एज इट इज जो ऑक्शन होता है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसका सेम फील देने के लिए। इन वर्चुअल वर्ल्ड इट कांट बी पॉसिबल लाइक रियल, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको एंटरटेन करने के लिए और काफी आपको एंजॉय देने के लिए। बाकी आज के गेस्ट से आपको मिला देते हैं, कपिल भाई, और जो कि राजस्थान से हैं, आरआर के फैन है, लेकिन दे वांट टू जॉइन इन आरसीबी, सो वी वेलकम्ड हिम। एंड नितिन ब्रो, एज यू नो दैट वो मुंबई इंडियंस के फैन है, बाकी 2-3 बार हमारे चैनल पे आए हैं लाइक। और ये कल जो ऑक्शन होने वाला है वो भी नितिन भाई एक्चुअली में कंडक्ट कराने वाले हैं। सो वेलकम वेलकम नितिन ब्रो एंड कपिल ब्रो। और उसके साथ एक और क्षितिज भाई हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे बहुत जल्दी, सो वेट करते हैं उनका। बाकी नितिन ब्रो, वेलकम टू अवर लाइव आईपीएल ऑक्शन स्ट्रेटजी सेगमेंट। It's our pleasure. So, Thank you. Kapil bro, Nitin bro, both are here. So, I am starting with Nitin bro. Yes, what do you think that, like, how you rate the retentions of RCB? Like, uh, IPL auction is a second part, but the retention and making the core of the team before the auction is the first primary thing, and we have to be smart in this. A sports slot is available up to 42 CR, and three slot is available for 33 CR, and RCB only retain three player for 33 CR. Like they can retain four, they can retain Chell, they can retain Harshal Patel as AV is retired from the all the form of the cricket. So we can't talk about AB, but what do you think that can they retain four, or their three retention are bets, or maybe one will be a better choice? Addition of one will be a better choice. माइक म्यूट है आपका नितिन भाई। Sorry, I was Yeah, speaking Nitin in bro. mute. हेलो। Sorry, I was speaking in mute. So, I was saying that as a neutral fan, it's interesting what they picked the three players. But as a RCB fan, they wanted either Harshal Patel or Yuzvendra Chahal to be retained. But there is a little strategy in that, saving some money because they save like 9 crores by not retaining the fourth player. So if they could get either Harshal Patel or Chahal below 9 crores, it's a bargain for them. They could make some profit there and target some other players. But maybe there's a different idea. They might be saving some big money for either any captain or something. So I think we hear a lot of newses saying that RCB is targeting X player, Y player, but I think that's not true. I guess because they won't be spending more than uh, 12 or 14 crores for any player. Probably if they want, they might go after one player for 12 or 13 crores. But whichever player they're going for that amount of money will be their captain for sure. आई थिंक मेरे को थोड़ा साउंड कम आ रहा है। इज दैट ओके फॉर क्षितिज? लाइक क्षितिज, आपके लिए ठीक है साउंड? Yes, it's a little bit low, but I can hear you guys. या सो नाउ गोइंग टू क्षितिज भाई, लाइक आप क्या सोचते हैं, लाइक रिटेंशन ऑफ आरसीबी? आप उन्होंने 3 किए, मे भी 4 कर सकते थे। वो उनके पास चेहलोस और सिरा और अर्शल पटेल काफी अच्छे ऑप्शंस थे, एबीडी रिटायर हो चुके हैं, तो क्या 4 बेटर चॉइस थी, या फिर 33 सीआर मेक इट काउंट? एक्चुअली अगर आप उनके रिटेंशंस को देखो तो मतलब उन्होंने चहल का तो सीन हम लोगों को पता है कि चहल वांटेड मोर मनी, आई गेस उनका वही सीन था। एंड जहाँ तक हर्षल पटेल की बात है, आई थिंक दे डोंट ट्रस्ट हर्षल, कि दे स्टिल कंसिडर हिम एज अ वन सीजन वंडर। दैट्स व्हाई दे वेंट फॉर सिराज रादर देन आई मीन हर्षल। सो और विराट एंड मैक्सवेल वाज द मोस्ट ऑब्वियस रिटेंशन फॉर देम। बट द पॉइंट इज कि वो कैप्टन किसको बनाते हैं अपनी टीम में अभी। आई एम लुकिंग
ahead for Maxwell to be the captain of RCB, but I don't know. Maybe in auction they can go for Shreyas, but they won't pay like Akash Chopra said, like 20 crores for him. I don't think so. या और कपिल भाई, आपको क्या लगता है कि आरसीबी के रिटेंशंस परफेक्ट है, या चेल जिस तरह कपिल क्षितिज भाई ने बताया उनको रिटेन करना चाहते थे, बट वो उस प्राइज मनी के लिए रेडी नहीं थे? तो आप क्या देखते हैं कि हर्षल पटेल को फोर्थ स्लॉट में रिटेन किया जा सकता था, या 9 करोड़ उतना वर्थ इट नहीं करता? क्योंकि एक रिटेंशन में लगता तो है कि 6 करोड़ दे रहे हैं, बट इट्स टोटल कॉस्ट यू 9 CR। वो देख रहे थे कि मतलब आप मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल दोनों में से एक को रिटेन करें, लेकिन उन्होंने मतलब पेस बॉलिंग को प्रीफर किया और मोहम्मद सिराज के साथ गए। अब वो चाहेंगे कि युजवेंद्र चहल उनको कम पैसे में मिल जाए, मतलब डिमांड एंड सप्लाई होगी जरूर, लेकिन युजवेंद्र चहल को और भी टीमें देखेंगी, लेकिन वो चाहेंगे कि युजवेंद्र चहल फिर से आ जाए। अगर वो भी ना आते हैं तो राहुल चहर के पीछे जरूर जाएंगे, लेकिन वो जरूर ये पहले पहले उनकी प्रायोरिटी रहेगी कि युजवेंद्र चहल या उनके जैसा ही कोई रेस्ट स्पिनर अपने टीम में लाए। और दूसरी ओर मैं चाहता हूं कि ईशान किशन को मतलब वो ऐड जरूर करे, क्योंकि आगे जाके वो विकेट कीपिंग के साथ उनको थोड़ी मतलब कैप्टनसी वाली एबिलिटी दे सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी जो रिटेंशन हो गए वो तो हो गए। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट जो अभी आईपीएल ऑक्शन होने वाला है 12 एंड 13 फेब को। उससे पहले हम उस एक मॉक ऑक्शन भी कराएंगे जो कि कल और परसों में होने वाला है। तो अभी बात करते हैं आईपीएल ऑक्शन स्ट्रेटेजी। आरसीबी जो टेबल पे ये भी आपकी दिखा आवाज सकता है, जिस जो है। उनका अच्छा कोर, जो ईसा कप नाम दे वाला उनका जो स्लोगन है, जो उनको पहली ट्रॉफी दिलाने में जो हेल्प कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक एक करके सारे स्लॉट्स पे चलेंगे। सबसे पहली पहली अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, लाइक अजीत पनगर भाई ने भी बोला था विराट कोहली इज ओपनिंग विद इवन लुइस। लाइक आई थिंक उन्होंने मेरा प्रीव्यू वीडियो जरूर देखा है जिसमें मैंने इन दोनों की जरूर से बात की है कि इवन लुइस लाइक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा दोनों को मिला के। गोइंग टू नितिन ब्रो, what do you think that who should RCB like target in this upcoming IPL mega auction for their opening slot? Like Virat is an anchor type player. Is they go for some hard hitter for like balancing the opening, like one can anchor and one can attack? Yeah, see, as I said, they need much money for getting their captain first. So they should spend a lot of money on their captain. Either it could be Shreyas Iyer or they could buy Ishan Kishan and groom him as a captain. So they should save that money for their captain. So opening slot, I think it's better to get back Devdutt Padikkal. Yeah, his strike rate is little less, and he's not. They many consider that beyond power play, he's not boosting the strike rate or something like that. But what I feel is he's a local boy. He's from sorry, he's not a local boy. So what I'm saying is he made his debut to RCB. So there is some trust within him. So you have to keep the fan following going. So I think he's very young. He has a lot of experience left in him. So I feel getting Padikal would save them overseas slot. They don't have to waste overseas slot for opener. So Padikal is doing good, but after some games he definitely is going to improve a lot. So I think they should keep faith in Padikal, give him a lot more chances as opener. So I feel Padikal Kohli is still the best thing for RCB. And why I'm saying is they have to spend the money for middle order and their captain. They need a finisher as well. They need a spinner. So they need a lot of money for that, not to spend on the opener. So I feel Padikal and Kohli is the best choice. या नाउ कमिंग टू क्षितिज भाई, आप किसको देख रहे हैं विराट के साथ ओपन पे? लाइक मैं तो विराट को ओपनिंग पे ही देख रहा हूँ। देखो, विराट तो ओपन करेगा, दैट्स फॉर श्योर कि विराट विल बी देयर फर्स्ट ओपनर। उसके साथ दे माइट गो बैक टू पर्डिकल because they too have performed well. But in case of overseas, they may try Matthew Wade. Maybe they won't go for Travis Head. Someone was commenting like they may go for Travis Head, but I don't think they will go because he's been their ex-player, and they haven't shown a lot of trust in him as well. So maybe they can go for Padikkal or Wade. And if you say, I don't think they'll go for Warner because they need an Indian captain to fill the spot of number 3 as well. Because Maxwell may play number 4 or 3, I don't know. But and if you look closely to the pattern of RCB, na,
they like taking an overseas all-rounder who also bowls fast. Like, for example, they took Jamieson, they took Daniel Christian, and before that, I guess Tim David was also there, but he isn't a fast bowler. But they have a knack of picking players, overseas players who are all-rounders. So that's for sure. They may go for Jimmy Neesham, I guess. और कपिल भाई आपके पास आऊंगा, आप किस एक ओपनर को देख रहे हैं विराट के साथ? अब जैसा कि क्षितिज भाई और जैसे नितिन भाई ने कहा कि डेविड पडिक्कल को बायबैक करना चाहिए, लेकिन डेविड पडिक्कल अब उनको शायद आसानी से मिलेंगे नहीं। शायद उन आरसीबी की रही है कि वो हाई फ्लावर जैसे हाई रेटेड प्लेयर्स को मतलब अपने टीम में शामिल करती है। तो मेरा मुझे लगता है कि इस बार शायद एरन फिंच के पीछे जाए, और एरन फिंच कप्तानी भी करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, और विराट कोहली और जो भी कप्तान बनेगा, शायद जैसन होल्डर की बात चल रही है, जो भी कप्तान बनेगा उनको सजेशन भी देंगे और एक अच्छी पावर रेटिंग भी कर सकते हैं वो। और ये अगर उनके पीछे अरुण फिंच के पीछे नहीं जाती है, तो मैंने रिसेंटली अभी आई से ही ऑलवेज शुड गो विद द ईशान किशन। बिल्कुल। और एक सवाल भी आए कुछ, क्रिस्लियन फॉर आरसीबी फॉर ओपनिंग, आई थिंक मे बी लाइक इवन हाँ लुइस हाँ के जैसे ही हैं, तो उनको भी टारगेट किया जा सकता है बैकअप में। और मनीष पांडे कैन बैट एट नंबर 3, तो हम नंबर 3 पोजीशन पे ही आते हैं। और एक और सवाल पहले आया था कि कैप्टन कौन हो सकता है नेक्स्ट, तो अगर उसकी मेरे बात करूं कैप्टन की, तो यार जो नंबर 3 होगा उनका या जो नंबर 7 होगा वही उनका कैप्टन होगा। मुझे नहीं पता कौन आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बाकी नंबर 3 के लिए जैसे मैंने प्रीव्यू में भी बोला था, मुझे को 2 प्लेयर्स लगते हैं, एक श्रेयस अय्यर है, एक मनीष पांडे है। तो एक केकेआर जाने वाला है और एक रहने वाला है आरसीबी में। तो कमिंग टू नितिन ब्रो, what do you think that who should they target, either Shreyash Iyer or like Manish Pandey, or maybe they can buy back KS Bharat as well? So what do you think that who they target at number 3? I think I agree with you on the number 3 slot. They should buy either Shreyas Iyer or Manish Pandey. See, it's up to their budget. To how much they can save is all about spending money for either Manish Pandey or Shreyas Iyer. Both are capable number 3 batsmen. They both play spin really well, and they both have their own advantage. If you pick Manish Pandey, he's your Karnataka buy, so he can be a face. He can create the fan following. Or if you pick Shreyas Iyer, he has age in his side. He has a lot of years of cricket left. So both are capable captains, very cool and composed captains. So I feel either Shreyas Iyer or Manish Pandey both should be okay. Totally good for number 3 spot. And if Shreyas Iyer goes out of their budget, they can go for Manish Pandey for sure, because Manish Pandey, I think most RCB fans want Manish Pandey in their team back. So I think it's better to get back Manish Pandey and make him as captain. And also Virat loves Manish Pandey, so it could make a terrific combo. He likes his fitness, so I think it's good. Sure, bro. Like I think also same as you. Now coming to क्षितिज भाई, आप बताएं आप किसको देख रहे हैं? इतने सारे ऑप्शंस हैं, और अभी अजीत भाई ने भी रिकमेंड किया है कि अभिनव मनोहर फ्रॉम कर्नाटका कैन बी ऑल्सो ऑप्शन। आप किस तरफ देख रहे हैं? पहले तो विदित भाई का शायद कमेंट आया था कि दे माइट गो फॉर एलेक्स हेल्स और रॉय, तो दैट माइट बी द केस। हाँ, ये कमेंट है इनका कि रॉय लुइस और हेल्स, एक्चुअली ही नोज बेटर क्रिकेट दैन मी, सो ही माइट बी राइट। कि सही बात है यार, पर्टिकल इंडियन ओपनर है और वो हाथ नहीं लगेगा। तो विराट के साथ ये तीनों में से कोई भी आ जाए तो बेटर है। एविन लुइस इज अ लेफ्ट हैंडर, सो आई वुड प्रेफर एविन लुइस। एंड जहां तक नंबर 3 की बात है, दे विल ट्राई हार्ड फॉर श्रेयस अय्यर। इफ ही डजंट कम, they might go for Rahul Tripathi or Nitish Rana and look to them as their number 3. And Manish Pandey, I think, is not a bad option, but in their priority list, he will be the last, I guess. हाँ बिल्कुल। और अभी नाउ कमिंग टू, नाम भूल गया मैं। हाँ, अरे नाम क्या था? कपिल भाई। हाँ कपिल भाई, सॉरी ब्रो। कमिंग टू कपिल भाई, लाइक
सॉरी अबाउट दैट। सो कपिल भाई, आप किसको देख रहे हैं नंबर 3 पोजीशन के लिए? एज इज वेरी क्रूशियल, लाइक आपको एंकर भी करना हो सकता है, आपको गेम चेंज भी करना हो सकता है, मेनी थिंग्स टू डू एट दैट पोजीशन। आप किसको देख रहे हैं Yeah, सर? I would like to suggest one overseas from South Africa in the Russia Wanda the recently ODI series against India, very well formed in the one century against India, और उन्होंने अपना इस परफॉर्मेंस को साबित भी किया था आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में कुछ मैचों में भी। तो मुझे लगता है राशि वांडा के पीछे जरूर जाएंगी। अगर वो भी ना मिले तो बैन मैकडरमट जो बीबीएल में, हाँ, बीबीएल में परफॉर्मेंस किया था उसके पीछे अगर आरसीबी देखे तो वो भी सही रहेगा। हाँ जरूर, बीबीएल के प्लेयर्स आईपीएल में आके इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। अगर आरसीबी मैनेजमेंट उनको थोड़ा ग्रूम करे, आगे बढ़ाए, तो मतलब सीएसके जैसा अगर थोड़ा उनको बाई बैक करेगी तो टीम, तो बैन मैकडरमट भी अच्छा खेल सकते हैं। तो ओवरसीज के हिसाब से राशि वांडरडोशन, अगर मैं इंडियन के हिसाब से देखूं तो शायद मुस्ताकिल ट्रॉफी में बहुत आरसीबी से बहुत से उठाते हैं, जैसे पिछले साल मोहम्मद अजहरुद्दीन, रजत पाटीदार थे। तो इस साल भी बहुत खिलाड़ी मतलब रडार पर होंगे। अंडर 19 के स्टार हरनोर सिंह पुन्नू और ध्रुव शौर्य के साथ में भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीएसके के साथ आईपीएल खेला है। और कई एमआई, ही इज अ पंजाब कैपेबल किंग, नंबर 3। या पंजाब पंजाब किंग्स की ओर से अगर दीपक हुड्डा को आप ऊपर भी भेजे ना तो वो उस नंबर पे भी सुटेबल होंगे। तो मेरे हिसाब से पहले दो पिक रहेंगी राशि वांडरडोशन या बैन मैकडरमट। बिल्कुल कपिल भाई। और अभी नाउ नंबर 4 पे उनका मैक्सवेल, आई थिंक जो उन्होंने लास्ट सीजन किया था, इस काफी वर्क किया उनके लिए। तो आई थिंक नंबर 4 पे मैक्सवेल इज नो ब्रेनर। नाउ इट्स टू क्रूशियल पोजीशन, लाइक नंबर 5 इज लाइक finishing, or like something is like number 5 and number 6 as a position, like you ever need one finisher and one batting all-rounder who can be your sixth bowler. Like in this top 4 no one can bowl like in इस छह में जो, तो आई कम टू नितिन ब्रो, you have to tell about both the position, like who should they target at number 5 and 6 position, as they ever need a one batting all-rounder who will be their sixth bowling options, and also like they need a good finisher at both the positions, like. And more than that, I will rejoin in just a 30 second, because when I will make myself from this out from this broadcast, then sound is okay. But when I put inside in this broadcast, the sound is very less to me. So I will rejoin. Until then, Nitin bro, you answer your these number 5 and 6, and after that Kshitij bro continue. All right. Okay. So speaking about batting all-rounders, I think they have Maxwell at 4. I think he's capable bowler too. He can bowl his off spin for left-handers. So they have their 6th bowler already, but still it's better to have another all-rounder 5 or 6. So I would say one Indian and one overseas. And an overseas is no-brainer. It should be, it could be Tim David. Get him back, or if you don't trust Tim David that much, you can get Shimron Hetmeyer back. So you want a finisher at number 6. So I think Shimron Hetmeyer or Tim David could be a right choice. So since my suggestion is Padikkal and Manish Pandey, you wouldn't have spent a lot of money. So your big money is waiting for someone really special. So you can even target Shah Rukh Khan. So at number 5, if you get back Shimron Hetmeyer, and at number 6, if you get Shah Rukh Khan, your finishing is absolutely will be great for RCB, which they lacked for lots of years. They didn't have a proper finisher. So if you can get Hetmeyer and Shah Rukh Khan to your team, I think at number 5 and number 6, the finishing is looking really dangerous and very fiery. I like to see that combo, Hetmeyer and Shah Rukh Khan combo for finishing. Shirej bhai, you can continue. Or it's not. Kapil, you want to add something on number 5 and number 6? At number 5 or 6, I would like to suggest this is Shardul Thakur. आरसीबी इज वांट टू ग्रो इंडियन फास्ट बॉलर आल्सो इज, मतलब उनको चाहिए, मतलब वो फास्ट बॉलिंग भी करके दे और एक अच्छे मतलब बैटिंग पे आके उनको रन भी बना के दे। तो शार्दुल ठाकुर एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और दूसरी ओर मैं देखना चाहूँ तो मिचेल मार्श, आरसीबी मतलब एक बॉलिंग ऑलराउंडर तो और चीज देखती है आपको पिछले कुछ सालों और द लास्ट ईयर देखा ही हमने। तो मिचेल मार्श बॉलिंग भी कर सकते हैं और आप चाहे ऊपर बल्लेबाजी करवा सकते हो नंबर 5 या नंबर 4 पर। तो मिचेल मार्श एक अच्छी हो सकते हैं।
और दूसरा एक कैरेबियन कैलिप्सो रहेगा, ओडेन रोमेरो शेफर्ड। तो मेरे हिसाब से वो पिक भी अच्छी रह सकती है आरसीबी के लिए, नंबर 5 या नंबर 6 के लिए। बॉलिंग भी करके देंगे, हार्ड हिटर बैटर भी है रोमेरो शेफर्ड। Yuvi bro, I was saying at number 5, number 6 for Hetmeyer and Shah Rukh Khan, because they can, since they saved money in the top order, I said Padikkal and uh, Manish Pandey, so they can spend their money for Shah Rukh Khan and Hetmeyer for the finishing role. And a couple Verma bro he's telling that number 5 and 6 could be Mitchell Marsh or Odian Smith or Omari Shepard. So over to you. या आई थिंक क्षितिज भाई को आई थिंक हमारी वॉइस नहीं आ रही है, सो दे आर विथ नोट अस। सो गोइंग टू एट नंबर 7 पोजीशन, लाइक एक काफी क्रूशियल पोजीशन है। जो भी टीम सक्सेसफुल नहीं है इस पोजीशन पे थोड़ा स्ट्रगल किया सारी टीम्स ने। तो लाइक आप किसको देख रहे हैं? लाइक जैसन होल्डर इज देयर, आई थिंक जिमी नीशम को भी आप टारगेट कर सकते हैं मे बी। और अगर इंडियन में बात की जाए तो लाइक ज्यादा ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जेवी है, राजवर्धन हांगरेकर भी हैं। तो आप किसको देखते हैं नितिन ब्रो? बाय कमिंग टू यू, लाइक हु वुड यू टारगेट एट नंबर 7 पोजीशन, एज इट इज वेरी क्रूशियल, एज मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल टीम हैव देयर वेरी गुड नंबर 7। Yeah, so for number 7, I want someone who could bat. So, I mean, not like a batsman, but a bowling all rounder. So, there are a lot of options. Since I already used two overseas part, like Maxwell and Hetmeyer, I would say my suggestion is for number 7. Uh, you can target someone who could bat. If possible, you can get Jason Holder. He could be a really handy option at number 7, and he can bowl the new ball. And if his budget is not within your reach, then you can maybe try and target Pat Cummins. He can bat, or Chris Jordan, with someone with a batting ability. Or if you're targeting for an Indian bowler, I guess you can target Deepak Chahar. Um, or Shadul Thakur could be even a very good option, because when playing at Chinnaswamy, batsmen will keep coming at you. And yes, yes, Shadul Thakur will go for runs, but still he will give you the important breakthrough wickets. He's known for his wicket taking ability. At middle overs, he will be in total control. So either Shadul Thakur or Deepak Chahar or Pat Cummins or Jason Holder. That's for number 7. Any bowler who could bat. That's that's my number 7. कार्तिक भाई, सॉरी क्षितिज भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक हो गया भाई, सॉरी सॉरी, अब आवाज आ रही है। या सो अभी आप आपसे नंबर 5-6 के बारे में, जो फिनिशिंग ऑप्शन है जिसमें एक 6 बॉलिंग ऑप्शन हो, पहले आप उसके बारे में बताइए। आप किस तरह सोचते हैं कि आरसीबी को क्या टारगेट करना चाहिए, देन आपका आप नंबर 7 पे आइए। तो स्टार्ट फ्रॉम नंबर 6। अगर आप सिक्स्थ बॉलिंग की बात करो, मतलब सिक्स्थ एट नंबर 6 अगर आप देखोगे, जो समवन हु कैन बोल इज, you can go for Jimmy Neesham or Daryl Mitchell, because Daryl Mitchell has played at number 6 for New Zealand, so they might be a good buy for them. और अगर आप इंडियंस की बात करो एट नंबर 6, we already have Shah Rukh Khan, but I don't know he bowls or not. I mean, he is a spinner, but I haven't seen him bowl much. But Shah Rukh Khan will be way too expensive for them. And if they want, they can go back to Shehbaz Ahmed, but he'll be good at number 7, I guess. So these are the options they have, and they might even go for Huda or Dhawan, but they'll be slightly more expensive than other players. कपिल भाई, आपका नंबर 7 कौन हो सकता जी यूमी भाई क्या बोले, जरा आपका माइक म्यूट था। है? आई एम तो क्षितिज भाई, आप नंबर 7 पे किसको देख रहे हैं लाइक आरसीबी के लिए? At number 7, I guess they'll need a bowling all-rounder. For that, they might go for someone like Shardul. Will be way expensive for them, so they won't go for Shardul. They can go for Rishi Dhawan, I guess. Rishi Dhawan will be within the range, and Rishi Dhawan at 6 or 7, he's good at both the places, because for Punjab, I guess he played at 7. Punjab or Mumbai Yeah. Indians, I don't remember. And one more option at 7 would be,
If they get Tim David at number 6, they might go for someone like Harpreet Brar at 7 because he can bat and he's a left arm orthodox, so they might go for Harpreet Brar as well. That's it. मेरे हिसाब या से नंबर 7 पर आरसीबी के लिए शायद अभिषेक शर्मा एक अच्छी पिक हो सकते हैं, क्योंकि दो 2018 से आईपीएल में खेल रहे हैं और कुछ 3 से 4 और आपको बॉलिंग भी दे सकते हैं और अच्छे हार्ड हिटर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी है। और विराट कोहली को ऐसे मतलब डबल बॉलिंग ऑप्शन जो शहबाज अहमद को खरीदा तो पिछले साल उनकी टीम में थे, उसी तरह के शायद इस अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग करते हैं और एक अच्छे बैट्समैन है। शायद ये अंडर 19 की कोच है। और दूसरी ओर राज बउआ, ये मेरी ओर पिक हो सकती है। अगर अंडर 19 और यूथ की इंडीज की ओर से शायद कार्लोस ब्रैथवेट अगर ऑप्शन में अवेलेबल हो तो वो उनकी तरफ जा सकते हैं। अभी मयूर भाई ने एक सवाल पूछा, शिवम दुबे एट नंबर 5, तो एक ही जवाब है मेरा इसके लिए। आई थिंक माइक एशन आए थे तभी उनको बाहर निकाला गया था नंबर आरसीबी से, तो आई थिंक अगर एक बार उन्होंने छोड़ा है तो आई डोंट सी एनी रीजन टू बाय बैक हिम इन आरसीबी अगेंस्ट। तो बाकी नंबर 8 पे एक ये पोजीशन थी युजवेंद्र चहल की, लाइक नॉट टॉकिंग अबाउट बैटिंग ऑर्डर, लाइक आपको 2 स्पिनर चाहिए नंबर 8 और 9 पे। युजवेंद्र चहल चिन्नास्वामी पे जो उन्होंने काम किया आई थिंक वो काम वापस से कोई नहीं कर सकता, और चहल भी नहीं है जो, और चहल भी नहीं है। तो लाइक अब आप आई थिंक चहल को बायबैक करना काफी टफ होगा मेरी नजर में। आप दीपक सॉरी राहुल चहर को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अगर मैं यंग यंग लड़कों में अगर बात करूं तो मे बी लाइक मेरे को जो श्रीलंका के लेग स्पिनर हैं, व्हाट इज नेम, Asaranga. Vanindu Asaranga. Hasaranga. असरंगा, बेनिंदु असरंगा, सॉरी। हाँ, तो बेनिंदु असरंगा में बी दैट गाय who can be a close to like after Rashid and Chel. So Nitin bro, I am coming to you, like who would you choose at number 8 at his spinning position, who can bat a bit, or and who can you choose as a specialist spinner at number 9 position? Nitin, your mic is mute. माइक इज म्यूट। Sorry. Yeah. So as you said, for the spinner, it's really hard for them to get back Yuzvendra Chahal. There'll be a lot of competition for the leggy. So they can try for Rahul Chahar, but there will be competition for that Rahul Chahar as well. So they can, but they can go harder for Rahul Chahar, because if they get Chahar, Rahul Chahar, the express part is completely sealed. If they weren't able to get the service of Chahar, then they should settle for average leg spinner. Either they can buy any under 19 or sorry under 21 or very young leg spinner who is doing good in the domestic circuit. There is Amit Ali. Amit Ali is available, who is a very talented leg spinner. He did well inside Mr. White Trophy, so they can target some young spinner like that. Or if they my as per my playing list, I still have 2 overseas spot left. So I would say use that overseas spot for overseas spinner. As you said, Ziranga can be targeted, or Adam Zampa can be targeted. So Zampa I think Zampa is a quality bowler who many team wouldn't spend a lot of money to. So easy to buy back, and I think Zampa would be the right option. या क्षितिज भाई, आपके लिए मैं एक प्राइमरी स्पिनर और एक ऐसा स्पिनर जो थोड़ी सी बैटिंग करके देते हैं, इसमें 10 और 11 पे परफेक्ट सीम बॉल, एक 11 पे तो सिराज है, एक और में जो ओवरसीज फास्ट बॉलर, डिपेंड्स ऑन द बॉलर जो आप स्पिनर चुनते हैं कि वो ओवरसीज होते हैं। लाइक ऑलरेडी 2 ओवरसीज एट नंबर 6 तक हो चुके थे, नंबर 7 पे मोस्टली ओवरसीज आने के ही चांसेस ज्यादा हैं। तो लाइक ओनली 1 स्लॉट इज रिमेनिंग, सो आपका एक प्राइमरी स्पिनर और जो दूसरा स्पिनर जो कि थोड़ा बैटिंग भी दे आपको। देखो अगर आप 8 की बात करो तो बेस्ट ऑप्शन इंडिया में आई थिंक कुलदीप यादव इज अ गुड ऑप्शन, although he's not in form, but he's a very good option at 8. And if they can get they can get him to bowl well, he'll be a very good option, Kuldeep Yadav. And one more option at 8 might be Shreyas Gopal. He's a very underrated leg spinner, I guess. And if he comes in range, then he might be a very good buy for RCB. And if you talk about overseas leg spinner, I think Mujib is a
good leg spinner. He's young. He can play for them. Yeah. And Mujib, and maybe they can also get Tabrez Shamshi, because at the last time they got him, he wasn't the same bowler which he's right now. So Tabrez Shamshi might be a good bowler as well. कपिल भाई, आपको क्या लगता है कौन से दो स्पिनर वो टारगेट कर सकते हैं आईपीएल ऑक्शन में, अकॉर्डिंग टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगता है कि शायद एस्टन एगर ऑस्ट्रेलिया से उनकी तरफ जरूर जा सकती है, क्योंकि वो एक बल्लेबाजी भी करके दे सकती है। दूसरी ओर श्रीलंका का ही है शायद माइस तिक्साना। वनिंदो श्रीलंका के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा था उनका। वो श्रीलंका के जो भी प्लेयर्स आते हैं वो बैटिंग तो कर ही लेते हैं, आपको पता ही है। और आरसीबी श्रीलंका के प्लेयर्स को ज्यादा ही ज्यादा गर्म करती है। पिछले कुछ सालों में उडाना, दुष्मंता मेरा, वनिंदो श्रीलंका, और अब उन्हीं की ओर से महेश तिक्साना, और दूसरी ओर मेरे ओर से एस्टन एगर और फैबियन एलन, ये भी अच्छे पिक आई होते थिंक कपिल भाई, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका क्रिकेट को, वो श्रीलंकन क्रिकेट को काफी क्लोजली वॉच करते हैं। दे पुट अप वेरी लाइक यंग नेम्स ऑफ बोथ द टीम्स। ओके नाउ, एक मेरा एक सवाल था ये मयूर भाई का, कि रायडू को होल्डर के, मैं पूरा बता देता हूँ, होल्डर के लिए 12 करोड़, रायडू के लिए 8 करोड़, रियान पराग के लिए 7 करोड़, ये आरसीबी ने प्लान किया है, और 20 करोड़ श्रेयस अय्यर के लिए। तो मेरी नजर में ये दोनों न्यूज फेक थी। आई डोंट बिलीव इन देम, बाकी आप लोग समझदार हैं। या सो 90 crores is complete. या एंड With what you said, लाइक 90 crores is complete. yeah, वही आई थिंक 12, 18, 20 and 20, 47 is crore in within 4 players. Now only left 10 CR for backups and other player. Now I have personal question, like C Karunaratne from Sri Lanka, batting at number 8 position for Sri Lanka. I think he doing a very great job in that India versus Sri Lanka series too. Like bowling all round is a very rare commodity in this mega auction. So who you think that Nitin bro, is that C Karunaratne? I don't know his full name, but I know his last name is Karunaratne and initially start from C. So C Karunaratne, are you think that he will be he get some team buyer in this auction? Yeah. As you said, Karnaratne is a very good bowling all-rounder, known for his hitting ability in death over, like pinch hitter. He is very handy. He comes in and suddenly he increases your scoring rate at 19 and 20th over. He's very capable batsman. Capable hitter. But as a bowler, you want 4 overs from him. That's a tough task if you are asking with him. So those 4 overs are very crucial in a T20 game. That too for RCB in Chinnaswamy Stadium, bowlers will go for runs. So Karunaratne as a bowler is a question mark. So if teams are ready to sacrifice that, if teams are ready to sacrifice 2 overs from Karunaratne, if they're just expecting 1 or 2 overs from Karunaratne, then he could be a really good choice. Same goes for Udan Smith as well. He's also a very good pinch hitter and he's a lower order handy hitter. But same thing again goes for Udan Smith. Will he be able to deliver you 4 complete overs? So those are the question marks they have to answer, and teams should be ready to test with those experiments. So if they're ready to just give 2 overs from Udan Smith or 2 overs to Karunaratne, these guys could be a really handy pick. Team with a lot of all-rounders could really go for it. Probably CSK kind of team which have tons of all-rounders in them. They can target players like this, but not affordable for any team that is going in with 6 bowlers, because they really need their bowlers to step in and bowl economically. या बिल्कुल नितिन ब्रो, मेरे को भी सेम लगता है कि बॉलिंग में जरूर वो टेस्ट नहीं हो अभी तक, लेकिन हिटिंग एबिलिटी आई लाइक हिम, लाइक ही हैज अ वेरी गुड हिटिंग एबिलिटी एट द डाउन द ऑर्डर। नाउ कमिंग टू लाइक नंबर 11 पे है सिराज, 8 and 9 भी डिस्कस ऑलरेडी। नाउ नंबर 10, आइदर इट कैन बी ओवरसीज फास्ट बॉलर, आइदर इट कैन बी इंडियन फास्ट बॉलर, डिपेंड्स ऑन योर नंबर 7 and number 8 what you choose at that positions. So like you have to tell your gun fast bowler with Mohammad Siraj, like जिसको आरसीबी टारगेट कर सकती है, लाइक एक मोहम्मद सिराज इज देयर एंड मे बी वन ओवरसीज फास्ट बॉलर, गन ओवरसीज फास्ट बॉलर एंड विद वन इंडियन गन फास्ट बॉलर. सो नितिन वो स्टार्ट फ्रॉम यू, लाइक हु वुड यू टारगेट फॉर overseas and Indian gun fast bowler? So since there is Siraj there, he's a very good. He has very good pace in him. So to partner with Siraj, I need someone who is a left arm pacer and who could be as a dead bowler as well. So it's easy to figure out a left arm pacer with the dead bowler combo. Is obviously there is only one bowler, I guess.
there is two bowlers, but I don't think RCB will go for Tamil Mills. So they will go for Mustafizur because he's a left-arm pacer and he can bowl his cutters really well. And I really rate him high as a death bowler because I often see batsmen struggling to pick his cutters. They keep on missing his cutters and they go for a play and miss for keeper. So I see lot of bowls like that from him. Also, I see he's a very good Yorker specialist. So I feel that Mustafizur could really be a handy option bowling the death overs with Mohammad Siraj. So Fizz and Siraj combo is something that I'm looking forward to for RCB and RCB fans. I think they might agree with this. Or Trent Bolt could be an option, but death overs to cover, I think they need a death over specialist. Trent Bolt could be expensive sometimes, not every day, but you need 1 or 2 games. He might be expensive with the death. But Fizz, he is your go-to bowler at 17 and 19th overs. So I think Fizz and Siraj could be a good option. And for Indian pacer, since I already told Shah Rukh Khan and Shardul Thakur, they won't be having much money with them to go for an expensive Indian bowler. So I would say settle for Kartik Tyagi or Shivam Mavi, who are new ball or middle over bowlers. So I would say Shivam Mavi or Kartik Tyagi could be their Indian bowler as per my list. I think you're freezed. Your screen is freezed. Okay. Shirij bro, you want to add something? Yes, Nitin. If you ask me for two fast bowlers, there aren't much gun fast bowlers kind of bowlers here. There's basically Pat Cummins, Trent Bolt, and Rabada, who are actually world class, but they will be way too expensive in the auction for RCB, I guess. Like teams like Punjab and Sunrisers who don't have bowlers, they'll go for them. And if you look at Indian pace bowlers, I think they might settle for someone like maybe Sakaria or like someone like maybe Shivam Mavi, as you said, because they are young pace bowlers, and Sakaria is good at the death also, and Shivam Mavi is good with the bat. So, and if you look at overseas, they may go for Lockie Ferguson, I guess, because he might be. I think he might be lesser expensive than Rabada or Cummins, I guess. So these are my two picks. I mean, Lockie Ferguson, Siraj, and Sakaria could be a great bowling lineup for them. Uh, Bro, you want to add something? Kapil, if you want to add something to Kapil this. Bhaiya, you want to add something? Yeah, I would like to suggest in my opinion, जो सजलोड इज अ गन फास्ट बॉलर और वो बैक भी करेंगे, मतलब बैकअप भी होंगे, मतलब मोहम्मद सिराज के साथ एक अच्छा ऑप्शन भी है, मतलब वो डेथ में आपको अच्छी बॉलिंग भी करके देंगे। दूसरी ओर पैट कमिंस अगर उनको थोड़े सस्ते भाव में मिल जाए तो वो बैटिंग भी कर सकते हैं और उनकी तरफ से बढ़िया बॉलिंग भी करेंगे। और मेरी एक मानना जरूर है, टाइमन मिल्स जो एक समय आरसीबी के लिए खेला करते थे, अब इस ऑक्शन में आरसीबी फिर से उनके पास जाना चाहेगी। और इंडियन फास्ट बॉलर के अनुसार मेरे को लगता है कि वो यंग बॉलर्स की तरफ भी जा सकती है, जैसे कि सिद्धीज भाई ने बताया, चेतन सकारिया इसे और कार्तिक त्यागी लाइक हुए, और आकाश सिंह राजस्थान रॉयल्स की ओर से भी कई फास्ट बॉलर हुए हैं, और चेन्नई में जैसे कि थे के.एम. आशिफ वगैरह हुए। और मेरे को लगता है कि शायद वो अंडर 19 स्टार्स की ओर भी जा रहे। रवि कुमार लेफ्ट आर्म में आपने बॉलिंग भी देखी होगी, मतलब लाइक एज उनका एक्शन भी मतलब खतरनाक गन बॉलर की तरह है, तो वो एक अच्छे बैकअप भी हो सकते हैं मोहम्मद सिराज के। शायद उन्हें प्लेइंग इलेवन में ज्यादा मौके भी मिलेंगे। That's great. So, Shirish bro, do you want to read out your playing 11? Like you said, from number 1 to number 11, right? Now we can read out your playing 11. Basically, I don't have like a fixed kind of playing 11, but if you watch closely whatever names I said, I think Virat with someone like Padikal, I guess, if they don't go for world class bowlers, the Virat with Padikal, and then at number 3 they might try Nitish Rana, or if you go for overseas, I think Van der Dusen is a great option, or Conway is also a great option. So Van der Dusen / Conway.
and at 4 it's obvious like Maxwell. At 5 you need to settle for someone who's cheaper, so I guess at 5 they may go for, someone like a Nisham who won't go too expensive. So what's that, like three overseas, I guess. And at 6, I'll suggest Shahbaz Ahmed or a Harpreet Brar. And at 7 again, someone like a fast bowling all rounder. So I guess at 7, they can go for Shardul. If they get Shardul, it's very good. But I don't think if they have any alternatives, they can go for a fast bowling all rounder. And then at 8, I suggest Mujib or the leg spinner which they said, Kuldeep. So that might empty a space for overseas slot. And then 9, 10, and 11 will be Siraj and Lockie Ferguson and Chetan Sakaria. That's very good. And Sports with Bro says hi and love you all. Love you too, Hello. bro. And because wants RCB to pick Jafra for next year, I don't know if their budget will allow them to get that. I'm sure if there is budget, they might go after Jafra Archer. But really, from next season, they will be very dangerous with Archer and Siraj. So, Yeah. yeah. So, Paya, you want to name your playing 11? Like from what you said from number 3 to 11, what is the best RCB playing 11 you feel? इन माय ओपिनियन फर्स्ट विराट के साथ ओपनिंग करेंगे, जैसे ईशान किशन अगर वो मिल जाए। नंबर 3 पर रहेंगे राशिव आंडरडूशन। नंबर 4 पर मैं देखना चाहूंगा ग्लेन मैक्सवेल। नंबर 5 एक अच्छे मतलब मिडिल ऑर्डर और हार्ड हिटर बैट्समैन टिम डेविड, और या जैसे मैंने बोला भी था, शायद मैंने एक नाम अनाउंस भी मेंशन भी किया, ध्रुव शोरे स्लैश उनको शायद अच्छे दामों में मिल जाए तो ओडेन स्मिथ। नंबर 6 मैं देखना चाहूंगा अभिषेक शर्मा। नंबर 7 शार्दुल ठाकुर। नंबर 8 को मैं एस्टन एगारियास कोई उन्हीं की जैसे अच्छे गेंदबाज, शायद इमरान ताहिर एक्सपीरियंस की तरफ चले जाए। नंबर 9 मोहम्मद सिराज। नंबर 10 एक ही गन फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड या पैट कमिंस में से। 11 यंग बॉलर्स रवि कुमार, चेतन सकारिया, कार्तिक त्यागी या कोई नया इंडियन जो लगातार खेलता आ रहा है इंडियन फास्ट बॉलर नवदीप सैनी को वापस बाय बैक कर ले, या भुवनेश्वर कुमार और एरन फिंच एक अच्छे बैकअप ओपनर। Yeah. So I think you named most of the Big Bash and Sri Lankan and the under 19 guys. You want a lot of youngsters in RCB setup. That's good. Let's see what Mike Hessen decides in auction. या एक्सपीरियंस He has his own plan. कॉम्बिनेशन वेरी गुड। Yeah, and my playing 11, as I suggested, I still want Padikkal back with RCB. So Padikkal Kohli is the opening option, and Manish Pandey as their captain at number 3, Maxwell at 4, and middle order is what I love: Shah Rukh Khan and Hetmeyer, because I didn't spend a lot in the top order, so I'm going for Shah Rukh Khan and Hetmeyer at 5 and 6, and 7 would be Shardul Thakur. They have to get him because they need a number 7 batsman who could bowl. Sorry, the bowler who could bat. So I think Shardul Thakur is a good option at number 7. Since I spent a lot, I'm going for a overseas leg spinner, Adam Zampa. And 8 and 9 would be Shiva Mavi at 9 and Mustafizur. I want him for death overs. So Mustafizur is my 10 and 11 would be Siraj. So that's my playing 11. And Yeah, Vipro is back. क्षितेश भाई, सॉरी ब्रो अबाउट Yeah. दैट बिकॉज आई नीड, बिकॉज पता नहीं क्या हो गया था, मैं ओपन कर रहा था माय फर्स्ट सिम से एंड इट्स नॉट ओपन बाय माय फर्स्ट सिम, तो सॉरी अबाउट दैट। Okay. Yeah, क्षितिज भाई लाइक आपने बताया अपना, या हाँ, कंप्लीट अभी कंप्लीट। तीनों ने बता लिया अपना प्लेइंग 11। Meanwhile, we just said all our playing 11s. लाइक सबका हो गया, तो आई थिंक जस्ट मेरे को रिपीट कर दो, जिससे मैं टीम ऑफ प्लेइंग 11 ऑफ द चैनल बता दूंगा जो हम प्रिडिक्ट करते हैं हर सारी टीम्स के लिए। सो जस्ट रिपीट बिकॉज आई डिडंट राइट एप फॉर एनीवन। I host it for you. You owe me one. Yeah. तो should I say my playing 11, युवराज भाई? आई थिंक आपने बताया होगा, आई थिंक सबका, आई थिंक जो मैच किया होगा हाँ, ओपनिंग पे, आई थिंक सबका, या और बोल्ड प्रिडिक्शन हो गया सबका। नितिन ब्रो आपने किसको किया? No, not that. Just the playing 11 we read. या
So now it's bold time prediction for is done. bold prediction. As this session is remembered by for Nitin bro as he predicted this one. Bold, not a common. You won't accept Manish Pandey? It's a very common. It's a very common. Holder, Manish Pandey, Livingstone. It's like everyone is saying that. Okay, bold prediction. Shradul Thakur. No, it's also common. I didn't count him. I Arey, don't Shradul, count him in As, bold. It's not common, yaar. RCB don't Not have common. budget to go for Shradul Thakur. But I'm No, saying it's they'll go not for common. Shradul Thakur. No, no. Like I can say that. What I say. Like Matt Andy is playing for RCB. Like this is kind of a bold prediction that nobody can expect from anyone. Like that kind of a bold prediction. Okay. Mustafizur Rahman for RCB. Maybe it's Okay. not a common, but yeah, it's a not a at that level Arey, at board. I need to name some backup players then, yeah. Not the playing 11. या या सो क्षितिज भाई आपके लिए क्या मतलब I think they'll go for Jimmy Nisham. this is the bold prediction that Prajwal is saying that Kedar Jadhav for RCB Kedar bold Jadhav. prediction ये Yeah, that's the best bold prediction I've ever heard from an RCB fan, yaar. I think that's Kedar a Jadhav troll. would be great for them. I think that's a troll prediction, not a bold prediction. yeah That's what क्षितिज I'm भाई saying, Nitin. I'm telling it with a sarcastic tone. If you get me, I'm telling it with a sarcastic tone. या तो क्षितिज भाई आप किसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं लाइक मैंने तो कहा जिमी निशम. जिम्मी नीसम ये तो मैंने प्रीव्यू में बोला था ये तो आपके होस्ट के साथ मैच कर ठीक है, गया इट्स नॉट इट्स अगर आप वेरी कॉमन बोल्ड का हो तो फिर it's about boldness because you have to play bold because you are now talking about Royal Challenger Bangalore so you have to play bold. चहल. No, yeah, it's not again. Like because I was saying that once again, Dan Christian. This is a boldness. once again युजवेंद्र चहल यार इससे बोल्ड क्या होगा और No, give him baby. No, Yeah. that's obvious Nitin. Yeah, many of the people are talking about. You can then go for Ruben Trumpelman यार, left arm pacer from Namibia. Yeah, that's a bold prediction. If that's we want from you, Kapil भाई आप भी करिए एक bold prediction like RR fan and talking about bold prediction is like RR. अब क्या बताऊं मतलब शायद वो पहले भी खेल चुके हैं आरसीबी के लिए दोनों ही या तो केदार जाधव नहीं रॉबिन उथप्पा. अब तो मतलब कपिल भाई का तो ये है कि एक नाम तो लेना ही है चलो कोई भी ले देते हैं बोल्ड प्रेडिक्शन में. अच्छा मेरी भी बारी है. डेवन कॉनवे एक अच्छी प्रेडिक्शन है मतलब वो टेस्ट प्लेयर है वनडे प्लेयर है टी20 प्लेयर है तो डेवन कॉनवे अच्छा मैंने डेविन कॉनवे को प्रेडिक्ट किया था सीएसके की बोल्ड प्रेडिक्शन में मुझे लगता है वो सीएसके जा रहे हैं. नाउ आरसीबी में अगर बात करूं तो मेरे को भी करनी पड़ेगी एक बोल्ड प्रेडिक्शन तो आई एम सेइंग दैट बेनंदु असरंगा को आप बोल्ड प्रेडिक्शन में काउंट करोगे या नहीं नितिन ब्रो आर यू काउंट बेनंदु असरंगा इन बोल्ड प्रेडिक्शन. Yeah, sure. I think Prajwal ने बोला Tamal Mills also bold prediction after giving 12 crore in 2017 I will RCB try. I think Tamal Mills will be like backup के लिए हो सकता है but they have only two left arm bowling option for death overs, either Mustafizur or Tamal Mills. So Tamal Mills can't be a bold prediction. Either Fizzer, Tamal Mills, any team is not getting for sure. Jason Berendorf is there. I think Daniel Sams is there. I said death overs. For death overs, they need Tamal Mills or Fizz. Harry Gurney, guy from Kolkata Knight Riders, and Danny Morrison said about him that he's a best death over specialist in this world. But I think he's a properly bodied by Jasprit Bumrah and Jofra Archer rise in the world cricket. Because Pro says baby. Yeah, because bro is saying that baby AB. But yeah, baby AB it's like all is about hype. Like everyone is saying that baby is coming to as he's a very good, like very great De Villiers and Virat Pen. Devolved Bervis surely in RCB. Yeah, that's a baby AB name. Devolved Bervis. Like नाम नहीं पता है तो baby AB is like but it's not to fair to compare anyone with AB de Villiers. Like it's unfair with youngster and AB both as well. It may be easy. It may be easy to buy. Sorry, it may be easy to buy Deval Brevis, but
they have to waste one overseas slot for him. So that's a Yeah, risk they have to take. that's the thing that like it's too early to he has to play domestic cricket of South Africa and perform there, and then it's if he is nearby, like everyone is not a Marco Jensen, and everyone is not a Mumbai Indians, their scout is a very good and they are doing a deep research into the things, and then they take he's a tall 6'7", more than 6.2 feet I think, and he's I think his death bowling is underrated. People will say that he's not death bowler, but what I see in just first three matches that he is bowling a 20th over, and there he only gave 8 runs, and he bowled 4 wide Yorker in that match, if I am correct. Yeah, Nitin bro. That- that's a bold prediction from Prajwal by now. रियान पराग बोल्ड प्रोडिक्शन। अरे अरे आई थिंक प्रज्वल भाई ने अपना आरसीबी फैन का जो वो था वो आई थिंक वो खो दिया है। वो कभी केदार जाधव को ला रहे हैं, कभी रियान पराग को ला रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट अगेन इन टिम डेविड। या दैट वन अ बोल्ड प्रोडिक्शन आई थिंक टिम डेविड। आई विल एग्री विद दैट। नाउ मैं भी अपना 11 बता देता हूँ, उतना याद नहीं है, मैंने मॉर्निंग में बनाया था। आई थिंक मॉर्निंग में नहीं, 2 दिन पहले बनाया था मैंने वीडियो। तो my Virat Kohli, and another is I am also going with Evan Lewis in my playing 11, and at number 3 I am got Manish Pandey, at 4 I am going with Maxwell। और ये भी बात सच है कि 4 शाहरुख खान नहीं है। अब मैंने किसी में इंक्लूड कर दिया है तो मैं वापस इधर इंक्लूड नहीं करूंगा, इट्स हार्ड टू, बट रायडू इनके में मैं कर रहा हूँ। मतलब बहुत हार्ड है एज अ सीएसके फैन, बट रायडू एट नंबर 5, एंड नंबर 6 पे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ क्या नाम है उसका, अभी जो नाम बताया इन्होंने, व्हाट इज नेम, Jimmy Neesham. Wesley Tople is there, Jimmy Please, Neesham, no, he's for number 7, Riyan number Prag. 6, no, Tim David, Hasanagar. yeah, Tim David, yeah. So I'm going with Tim David at number 8. I have no sixth bowling edge. Can't go for number 7. Like Tim David slash Jimmy Neesham. I'm not sure about number 6 position. Because I can't be a Jimmy Neesham at number 7 with the bowling option of Tim David in top 5. Like Maxwell can also bowl, but at number 7, I'm going with Holder. Like everyone is making hype that he's coming to RCB, but I think it's very rare. But Holder, क्योंकि कुछ तो बोलना ही है ना मैनू भी, तो Holder. At number 8, I am backing Sundar. I am again backing Sundar, and number 9 I am going with Shreyas Gopal or Markande like things, and number 10 I am going with our overseas fast bowler, and that is Pat Cummins or Ken Richardson. My vote go for Ken Richardson, and number 11 is Mohammad Siraj. So this is my 11. I think कुछ तो मैच किया ही होगा आप लोगों से, I think 5 या 6 प्लेयर तो, या So सारे ही डिफरेंट। you should go with Ambati Rayudu as a wicketkeeper. You missed the keeper. Yeah, Nitin Brai, yes, is keep now, and he should know option Tim David part-time wicketkeeper. मेरा तो पूरा मतलब क्या बनाया है मैंने, विकेट कीपर नहीं है मेरा टीम में। Just change One Ambati more Rayudu to change. Dinesh Karthik. Dinesh Bana. Yeah, Raidu change with Dinesh Karthik. Yeah, that's the right choice. Yeah. Now, and Prajwal bro saying that Mahipal Lomror. I think Mahipal Lomror will play for Rajasthan Royals at number 4 position. This is my bold prediction for Rajasthan Royals. And talking about this team, Ken Richardson. Yeah, my bold prediction is Ken Richardson. Are you agree that this is a bold prediction? Ken Richardson is their first fast bowler. They will go for, and he will be on their first 11. That's my bold prediction for RCB. Maybe, but he didn't have a good BBL this year. Remember? He's That's a not. good He had not a good Big Bash League this year. Yeah, this year he didn't had a good season. He went for runs and he didn't pick many wickets. This year. अरे नितिन ब्रो, कुछ नहीं होता है इन सब चीजों से। जब उनका सीजन अच्छा गया था तब पिक हुए थे, बट मैच तो तब भी खेलने को नहीं मिले थे। आई थिंक खेलने को मिले थे, बट ही आई थिंक इंजर्ड हो गए थे एंड आए नहीं थे कुछ पार्ट्स के लिए। एंड अनदर बोल्ड प्रेडिक्शन, बट इट्स नॉट बोल्ड। आई थिंक एडम जंपा विल बैक इन RCB or Hasaranga. Adam Jampa slash Hasaranga. It's not a bold prediction, but it's my prediction. One of from both these two will be back in Agree. RCB. Agree. Adding one Or right? surprising thing, Yeah. those English RCB
again tried to oversiege BBL, Tim David, like Yaswani Osaranga. Kapil Bro uh, likes uh, all the BBL players and Sri Lankan players. no, no, I think this time it's not about the BBL player. I think the availability of the English player is also issue, and the most of the English players, Nahin, who are nahin. all rounders, No, are not available actually. no, he said Jaws English. Josh English. I think he said the RCBs again go for like big best players. Josh English slash Nathan Ellis. Yeah. Again, another BBL player, Nathan Ellis. Yeah. So tomorrow, hopefully, we have a mock auction. So I think Nitin Bro is there to host the auction, and I am his co-host. So very well wishes for Nitin Bro and also for our guest like what's Couple. Kapil. Sorry. I mean, I think there is a many guests in like I do it live every day, and the guest will change frequently. So it's hard to get like remember the name who will come today and like. But it's a very sad to like I am forgetting the name in today's like live sessions. Sorry about that. It's not your hard name, but yeah. So Kapil Bro is a uh, ओनर ऑफ राजस्थान रॉयल्स तो विशिंग यू वेरी गुड और बाकी सारे जो लोग लाइव में जुड़े हो यार क्रे कॉलेज विकास ठाकुर प्रज्वल भाई और उससे पहले नमन केवल नहीं वो तो पार्टिसिपेंट है जो भी यार सब आ रहा है और होपफुली वी कैन डू लॉट ऑफ फन एंड वी कैन डू लाइक जो फील जो एक्चुअल ऑप्शन की होती है हम भी लेने की ट्राई करेंगे पार्टिसिपेंट भी लेने की ट्राई करेंगे बाकी आपके लिए 12-13 के लिए कुछ टाइम पास तो बनाना ही था तो मे बी आपके लिए भी एक एज अ फन सोर्स तो मे बी आप जुड़ना यार कल 9 बजे आई थिंक 9 बजे से 9 से 9:30 के बीच में हम स्टार्ट करेंगे नॉट श्योर अबाउट द परफेक्ट टाइमिंग लाइक इट्स अ मल्टी पीपल event so it's depend on the people also that they were like they will part of the event so अगर 12-13 वाले ऑप्शन में से मैच हो गया तो हमारा कुछ मतलब कुछ सरप्राइज रहेगा और क्या ऑब्वियसली अभी सरप्राइज आपने बोला सरप्राइज रहेगा इफ आई टेल यू देन हाउ इट बी सरप्राइज लाइक ना या बट I think UV Bros सॉरी सॉरी playing. सॉरी सॉरी आई थिंक वो थोड़ा स्लाइड हो गया सॉरी अबाउट दैट आई थिंक जो भी हमने जो प्रेजेंटेज लाइक डिस्कशन किया है उसमें से अगर किसी का मैच हुआ तो उसको भी लाइक ऐसा थोड़ी ना अगर हमने कुछ प्रिडिक्ट किया एंड पीपल गेट लाइक हमने सही प्रिडिक्ट किया है देन बी द गेस्ट हैव टू अवॉर्डेड फॉर दैट एंड है ना एंड अनदर फॉर इफ आपने अच्छा टीम बनाया तो ऑब्वियसली वी कैन डू सम सरप्राइज फॉर दैट आल्सो सो एवरीवन यार जो भी हमारे साथ हैं यार कल वापस सारे लोग जुड़े हैं और बहुत सारा फन कल परसों दोनों दिन में मिला के हम ट्राई करेंगे आपको देने का एंड काफी मेहनत लगती है लाइक इट्स टू इजी टू लाइक वॉच इन यूट्यूब और इन अ मोबाइल बट बिहाइंड द सीन लाइक ग्रुपिंग द पीपल्स एंड like making the things like happen so it's a very hard to get मतलब do but आप लोग हैं यार थोड़ा सा यार आप most नितिन वो 70 more than 70% are people that watching us is not subscribe my channel so what are you saying about that kind of a people like why they not subscribing like they watching in my every video? He's a very hardworking guy. He's really trying hard to put you guys entertain. He's using all his creativity to entertain you guys. So keep following him, keep supporting him, subscribe his channel, Yeah, and that's give him we are subscribe. here for all of our viewers like but so some like we know that we you love us but so like it's like love is not counted in the numbers but their subscriber number it really motivated us so please do subscribe बाकी कल जरूर मिलते हैं और अगेन थैंक यू क्षितिज भाई जो भी थैंक यू हमारे साथ नहीं है वो चले गए एंड थैंक यू Kapil. Kapil bhai and thank you Nitin bro thank you like everyone who joined us in the live session thank you everyone and special थैंक thanks यू to our all the guests they put up their hard efforts with us and like they are also giving their precious time so thank you Nitin bro Chetish bro and Kapil Verma bro It's so always thank you bro pleasure with Ganesh. for joining us like Cheers. we will meet tomorrow in the live mega auction sorry mock mega auction so hopefully stay tuned up to that और यार ये watching बढ़ती क्यों जा रही है like people अभी जुड़ रहे हैं so sorry guys for like we end our session because we all cover all the topics that that will be discussed in this live session so hopefully all of you are subscribe our channel and
like meet us tomorrow, like in our mock auction segment. Like we are doing a lot of hard work for the mock auction, and please join us tomorrow for our mock auction session. Like it's a very important to all of us. Like it's a very good fun to watch, and it's a very good like fun to be part and hosting the show like that. So it's be an honor to be with you, and बाकी मिलते हैं आप सब कल लोगों से, बाकी तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड पुट अप मास्क.